When I say management accounting and when I say financial accounting, I would take you to your home. But before I take you to your home, I would like to ask you that why accounts has come into existence, Motasham? Why accounts has come into existence altogether in this world? What's the need of accountancy as a subject? What is the role of accountancy in this life? Miss, it is the language of a business Language of a business. Why is it's called the language of a business? because miss our daily transactions that are being recorded on daily purposes. It is all part of this. It could be done through accounting. Okay, so you said recording of transactions. And that's exactly the reason why accountancy has come into existence. Recording transactions. What is a transaction? Miss, business datas. Is it really business data only? Um, Misinformation, daily information regarding in accounting and like this. Transaction को क्या कहते हैं अलिशबा? What do we call transaction? You can type it in the chat if your mic is not working. बाय एंड सेल एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन को हम अगर लेमैन में या आसान भाषा में कहें तो लेन देन buy and sell anything. You're buying and selling anything, you're exchanging in return of something, whether a product, a service, in exchange of money, in exchange of check, in exchange of maybe another good. Like previously when there was accounts was not uh, invented, how people used to buy and sell when there was no money. Yes. There was a system known as the barter system. If you have come across this word, Motasham, tell me. Yes, miss, I have came across, but I haven't learned about it. Barter system, where you have wheat, I have rice. I need wheat, you need rice, and we exchange the products between each other. Would that be called a transaction? Yes, miss. Yes, definitely. Any kind of lane dein, any kind of buy or sell, any kind of exchange will be known as transaction. And in a business, as the business grows from a small level to a big scale, it needs to record these transactions. Why? Why any business wants to record these transactions? What's the reason behind? Because miss, because no error would arise. In order to avoid errors. In order to avoid what kind of errors, Motasham? Miss, like like for example, if I give you an example of double entry, like debit side would be greater than the credit side, like just in case to like balance the sheet, balance it. No, I'm asking a very simple question. Why there is a need to record any transaction? Why? Why any shopkeeper would like to record any smallest transaction? Why any, maybe your mother at home is buying or selling something. Why would she like to record that transaction? Why in not order just to put it in the memory? in order to balance out his budget or avoid mistakes like this. In order so that they do not forget about it. Okay? Yes, miss. Because if you keep it in your memory, there is a chance that a human might forget it. A human might make a mistake in remembering the exact amount of the transaction. Maybe a human will might make an error in remembering the exact kg or the weight or the number of units that they contracted in that transaction. There is a Yes, chance of forgetting, yes or no? yes, miss, it is. Maybe you will not forget, but the other party might forget.
And then there can be a conflict, yes or no? Yes, miss. He will say, no, 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 no. I remember exactly. It only you told me that it only costed 1,000 rupees. And you will say, no, 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 no. I told you 1,200 rupees. And you said okay for that. No, 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 no. I asked for a discount. You gave me a discount. Now both the parties are fighting. So in order to avoid this, it has always, always, always been considered, suggested, advised, and even if you look at it from the religious point of view, it has been instructed that write down your complicated contracts, make a note of it, record it, so that you can avoid any kind of confusion, forgetfulness, errors, conflicts, and so on and so forth. And there came the need of accounts in life. Now we will be understanding that, okay, accounts came into existence because there was a need. Fine, fine, very good. People started keeping clerks. People started keeping clerks, जिसको मुंशी भी कहते हैं. They had big registers. They started recording the transactions. Now I would like you to come to your home. Come to your home. Tell me, who is leading in your home? Who is the boss? My mother and father. Mother and father. All right. Your home, the one who is leading your home, could be your father, could be your mother. It varies from place to place, okay? So one is a father, one is a mother. Can you tell me the role of your father at home? Providing financial support. Providing financial support. That means source of finance, okay? Yes, miss. Source of finance. What is your second purpose of your father? Mm, teaching Se- us manners. yes. What? Teaching us ethics. Teaching us ethics, okay. Anything else? Like related to accounts. Source of finance. Your father is concerned about the source of income for the family. Yes or no? He would. Yes, miss. उनकी सारी दिन की सोचें यही होंगी कि मैं किस तरह से अपनी फैमिली की इनकम बढ़ाऊं, या मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली साउंड और प्रोटेक्शन कैसे दूं, हर हवाले से. चाहे फिर वो बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे फिर वो बच्चों की हेल्थ का मामला हो, चाहे फिर वो बच्चों को अब्रॉड सेट करने का मामला हो, किसी बेटे की शादी कराने का मामला हो, किसी बेटे को बिजनेस सेटअप करने का मामला हो. ही वुड बी कंसर्न्ड रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द हाउस. यस और नो? Yes, miss. His second concern would be, Alishba, type in the chat box. What would be his second concern? Looking all outside matters. Like, example, for example, taxes, liabilities he have to pay. Exactly. Now your father would be concerned about the government related issues. Yes or no? Yes, Which miss. we can call legal issues, legalities. Maybe there are some taxes which needs to be paid, property tax, income tax. Maybe there is a shop that needs to be registered under the government or the school, whatever. Whatever your father is doing, anything related to the legal matter, he will be concerned about that as well. Yes or no? Yes. So these are the some of the major stuff that your father would be concerned about. What about your mother? What is she doing? What's her role?
Yes, Mohtasham, what's her role in the house? teaching us manners. Teaching the children manners. Okay, that see, ethics, the thing related with ethics is the responsibility of both the parent, whether mother or father. ओके, Okay, miss. द Yeah. जिसमें जिसको हम कहते हैं औलाद की तरबियत दोनों की जिम्मेदारी है, माँ की भी बाप की भी बराबर की जिम्मेदारी है, ठीक है। सो दैट अपार्ट फ्रॉम Okay. दैट व्हाट अदर टास्क्स इज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर एट होम? मोहतशम, नो आइडिया, व्हाट It's हैपेंड? uh, guiding us, guidance. All right, can I say that your father earns the money, brings home some budget, gives some of the budget to the mother to run the house? Yes, miss, it does happen. Yes. So she gets a budget and she needs to run the house in that budget. Run the Yes. house. And under run the house, what all she will be concerned about? Daily expenses, डेली managing the budget. एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, क्या पकेगा आज, मासी को कितना देना है, दूध वाले की देना है, बिजली वाले को देना है, ट्यूशन फीस देनी है, Yes. कौन से बच्चे को कपड़ों की जरूरत है, कौन से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, मतलब हाउ शुड शी स्पेंड दिस बजट, व्हाट आर द प्रायोरिटीज इन द हाउस, ठीक है। किसको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, किसी बहन की शादी तो नहीं है, कोई मेहमान तो नहीं आने वाले, ईद तो सर पे नहीं है, कोई रिपेयरिंग का काम तो नहीं आ गया, कोई जनरेटर खराब हो गया है, मोटर खराब हो गई है, Okay. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स दैट योर मदर इज लुकिंग आफ्टर इनसाइड द हाउस? Yes, miss. Yes. So now what we will do, once you understand that the role of mother and father in your home, you will be easily able to relate this with the organizational roles. Your house is nothing but a unit of an organization. One unit of an organization. किसी बड़े इदारे को समझना हो ना, बहुत बड़े इदारे को, अपने घर को समझ लो पहले। समुंदर को समझना हो ना, समुंदर को, एक बूंद पानी को समझ लो, समंदर समझ आ जाएगा। पूरे समंदर का पानी पीने की जरूरत नहीं है समंदर को समझने के लिए। बिरयानी की देग चखनी हो ना कि कैसी पकी है, पूरी बिरयानी की देग खाने की जरूरत नहीं है, एक दाना ही चखना होता है कि कैसी पकी है बिरयानी। राइट और रॉन्ग? Yes. Yes, miss. Absolutely right. तो कभी भी कोई बड़ा फलसफा समझना हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, उसके एक यूनिट को पकड़ो, सिरे को पकड़ो। पूरी इंसानियत को समझना है, खुद को समझ लो, खुद को समझ लो बस, पूरी इंसानियत समझ समझ में आ जाएगी। तो इदारे का यूनिट आपका घर, और आपका घर ऑलरेडी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो कैटेगरीज है, एक फादर का रोल, एक मदर का रोल। इसी तरह इदारे में भी, इसी तरह इदारे में भी दो रोल्स हैं इदारे में, एक फाइनेंशियल रोल, एक मैनेजमेंट रोल। और इन्हीं रोल्स की रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंटेंसी इजाद की गई और उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जितना भी तुमने फादर का रोल पढ़ा है ना वहां पे, कि फादर ये करते हैं, फादर वो करते हैं, फादर के ये कंसर्न्स होते हैं, वो सब समझ जाओ कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है। और जो भी मदर करती है ना घर में, घर का ख्याल, बजट, घर को चलाना, इंटरनल मैटर्स, बजट को कोई चीज वेस्ट नहीं हो, ग्रोसरी लेकर आ रहे हैं खाना जाया ना हो, बर्तन ना टूटे, मेंटेनेंस रहे, रिपेयरिंग का काम रहे, बच्चे ठीक रहे, सब खुश रहे, सब घर में सफाई रहे, और ये सारे मामलात कौन देख रही है? माँ। और ये सारे मामलात इदारे में कौन देख रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Okay, miss. So all the internal matters of the organization, इंटरनल मैटर्स अब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ तो माँ क्या क्या ख्याल रख रही है घर में? मासी को तनख्वाह दी, दूध वाले को तनख्वाह दी, न्यूज़पेपर वाले को तनख्वाह दी, अच्छा ट्यूशन वाले को तनख्वाह दी, कारी साहब को तनख्वाह दी, स्कूल की फीस चली गई, ये सब माँ देख रही है ना, इंटरनल मैटर्स। तो इसी तरह इदारे में भी इंटरनल मैटर्स यही सब तो होते हैं, एम्प्लॉय सैलरी, फिर जो रॉ मटेरियल आया उसकी वेस्टेज तो नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नहीं हो रही है, बिजली का बिल गया नहीं गया, रेंट वाला रेंट का बिल गया नहीं गया, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ रहे हैं, इंटरनल मैटर्स।
इससे रिलेटेड, इंटरनल मैटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, तमाम की तमाम, ऑल दीज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच वी विल बी लर्निंग इन एसीसी. Okay, miss. Same way, the role of the father in the house, his concerns about increasing the source of income, about handling the legal matters, about handling the governmental issues, about handling all the external affairs of the house is under the responsibility of the father, which in an organization, financial accounting is responsible for. External matters, sources of finance, government related matters, reporting matters, बैंक से लोन लिया है, बैंक को इंटरेस्ट देना है, जवाब देना है, ऑडिटर रखे हैं, and so on and so forth. So this was just an overview about what accountancy is all about and how it's been divided between management accounting and financial accounting. And throughout your ACCA papers, you will find that your 17 papers are divided. Either some of the subjects are falling under management accounting or some of the subjects are falling under financial accounting. That's how it's divided. So right now we are in the first level, which is the foundation level, which is also known as FIA, Foundation in Accountancy. And we'll be starting with FIA. FIA, we have 7 papers: MA1, MA2, F2, FA1, FA2, and F3. Okay, so these are your and F1, 7 papers. These papers fall under the category of management accounting. These papers fall under the category of financial accounting. My name is Isha Zubair. I'm an ACCA member. I'll be taking care of your management accounting subjects, whereas Ms. Bushra will be taking care of your financial accounting subjects. F1 is a theoretical paper, and it's possible either Ms. Aksa will be teaching you this, or most probably I'll be teaching you this subject. What is F1? F1 will give you a general understanding about what is business, how business is run, and what other things are there apart from accounts in a business. So that, because we just don't, ACCA does not only want us to become chartered accountants. ACCA wants to make us very, very groomed, very, very well equipped, very, very smart, think ahead, people who think ahead, professionals who think ahead, who are not just learning rote learning, but they are using their minds. They are inventing something new. They are problem solvers. And that's why ACCA will not only teach us accounts, but will also give us a good knowledge about how businesses run, what is the role of a manager, what directors do, what shareholders do, and then who are the auditors and tax related stuff, and so much more. So that even after you complete your ACCA, you don't want to do a job somewhere, you just want to start up your own business, you just want to become an entrepreneur, you have good knowledge to do that. You are well equipped and well groomed. Okay. Now the plan is, the FIA plan is that we will be completing this within a year. Okay, Motasham? We have this plan for our Okay. students that whoever enroll with us for the entire package, it is our responsibility as an organization, as an educational institute, that we make sure that your FIA papers, these 7 papers, the first module of ACCA is completed within a year. The mentors will guide you accordingly. Your ACCA tutors will guide you accordingly. They will be completing the syllabus as well as guiding you when to appear for your exam, how many tests you need to give, how many mocks you need to give. Okay, so this is all what Okay. we are going to do. So let's start with the first chapter, and I would like Alishba to teach us the first chapter, as we have done it in the class with her, but unfortunately her mic is not available, right? So what can be done? Alishba, can you please try switching on your mic once again? Just let's give it a try. I would like to see how much have you grasped about the first chapter. Yeah, sure. Connect with your mobile. That would be great if we can hear your voice. Yeah, sure. Take your time. Come quickly. All right. So meanwhile, let's discuss about the exam structure. What's the exam structure for these papers? You have any idea, Motasham, about it? Um, Yesterday I go through to the syllabus and You you went through what? ACCA brochure? FA1 syllabus, and
MA2, I guess, syllabus. I let me check it again. Wait. Oh, it's okay. Okay, so here is the syllabus in front of you. How many sections we have? We have altogether part A, B, C, D, E. There are altogether 10 chapters in this subject. Okay, now I am marking today's date, which is 12th of January. We are assuming that we are starting today, 12th of January, and I usually try and complete MA1 within a month. That's my target. That's my deadline. Okay, before 12th of February, inshallah, before 12th of February, we will be done with MA1. Inshallah Ta'ala. We have 10 chapters, and you are going to follow these 10 chapters as per my guidance. And my recommendation would be that as soon as we complete the chapter, you go home, read the chapter once again, highlight the definitions, make a short one-pager notes for your own self for that particular chapter, and solve the Okay. questions. Which textbook? Can What your can textbook, I? Tasham? Yes, miss. Uh, You have bought your textbooks? Which publisher have you bought? Miss, I have the past papers for of Sajid Munir, A levels and count of accounting. And yeah, last year I used to study with Sir Dishan Malik. He is a teacher at Bodmas, and he gave me his notes as well. It's also in a past paper, but like I Okay, have two now past papers, but listen I to don't me, have certain. Mohtasham. ACCA prescribes us two publishers, okay? One is BPP and the other one is Kaplan. ACCA have different textbooks, okay? Those, some of the knowledge you might be thinking that, yeah, I have studied this before in accounts and that, but that's fine. But you have to get these textbooks because now we are studying not a local qualification, but we are studying an international qualification. This is Chartered Accountancy from UK, okay, affiliated from UK. Yes. The textbook, we have two publishers, one is BPP, the other one is Kaplan. And there is one textbook and revision kit, okay? You have to purchase the textbook and the revision kit. What I would suggest to you is that don't purchase the textbook because I have the PDF. Okay, this PDF, the soft copy, I can share it with you. If you are comfortable using the PDF, you can study through the PDF itself. It's good enough. Okay, purchase the Okay. revision kit. Okay, Okay. I am going to use this publisher, BPP. So purchase the Okay, miss. revision kit of BPP. You can also purchase the revision kit of Kaplan for further practice if you want to do extra practice. But if you are going to just listen to me, I would just say go with this. That's it. One publisher, follow one publisher. Just Yes. follow one Okay, miss. publisher, it's good enough. I have cleared all my papers using one publisher. I have never opened the second one, not even in the attempt to practice extra questions, and I've cleared with good marks. Okay, so yes, this is enough. Revision. This is enough. But if you are interested to practice more, you can go ahead and purchase the revision kit of Kaplan as well. Okay, it's up to you. Okay. I would be following BPP in the class. I would be sharing the PDF with you guys. Okay. And we have 10 chapters. And what would be the examination structure? There would be 50 questions in the exam. Okay. And your total percentage of the examination would be 100 marks paper. It will be a CBE, computer-based exam, and there will be MCQs. Okay, MCQs, that means there will be 4 options. You have to select the best option, the right option. And the 50 questions, some questions might be of 2 marks and some questions might be of 1 mark. Okay, it will be a mix. Okay. So examination structure is pretty easy. It will be a 2-hour examination, okay? And usually people finish very fast this 2-hour examination. They don't even, if they have prepared well, they don't even take the complete 2 hours to complete the examination. They are out from their hall within 1.5 hours, 1 hours, right? Now, coming Okay. to the chapter,
Alishba? Can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. I can hear you. So good to hear you now. So, yes, we have completed the first chapter already. I would like you to go through it and let's see how much you have grasped. And we'll see Hmm. how going across. So, the first chapter, business organization and accounting. There are 7 topics in this chapter. And Alishba, over to you. All right. First of all, we are discussing what is an office. Office is an organization where all the tasks of a business are carried out. For example, the administration, their purchases, or their sales, or their marketing, everything is carried out there. And the most common functions carried out at office are purchasing, personnel, which is human resources, general administration, finance, and marketing, sales and marketing. I have to elaborate this. Yes, can you elaborate a little bit, like using an example? Example like purchasing anything that is needed for business. Assets, ma'am. Should can I explain the assets too? Hmm. So right now you're explaining the office. So can you tell me, Alishba, like what example do you have to explain an office? Uh, Office, for example, the main building at for any business. Okay. Hmm. Like you haven't even given the example. I want specific example. Use a name of a company or a business. Okay, okay. Just give me 5 minutes. Let me think. Mm, let me think about some AC installers जो Okay. AC install करते हैं. So first of all उनका एक ऑफिस होगा जहाँ पे उनके उन they will be taking orders, they will be receiving calls for their inquiries, and all administrative work will be carried out there. Am I right? Right. Right. All administrative work along with decision making, along with Yeah. some policy making, along with whom should they hire, whom should they fire, along with what will be the next strategy for marketing, along with from where should they raise the finance, should they take a loan or not. Yes? Yes. Yes. Okay, thank you. All right, moving ahead. What is this? What is this? The authority, it is the flow chart of authorities, like how the authorities Okay, flow. Alishba, what is departmentation? What is departmentation? Departmentation is a partition in a business, we can say, कि different different आपके जो भी functions carried out हो रहे हैं आपके business में, आप उसके अलग अलग से वो बना दें, departments बना दें, उसके groups बना दें peoples के, जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो. जस्ट लाइक अगर आपने मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सारे लोग होंगे जो कि आपको एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, जो आपको एवरीथिंग अबाउट बिजनेस वो आपको डिटेल्स दे रहे होंगे. इसी तरह अगर आप परचेजेस का डिपार्टमेंट बना दें तो दे विल बी लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग दैट अ बिजनेस नीड, और वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें अपने बिजनेस के लिए, क्या क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें फर्दर नीड हो सकती हैं. इसी तरह फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, सो दे विल बी लुकिंग आफ्टर द मनी और ऑल द अमाउंट. Right. Exactly. मोहतशम, डिपार्टमेंटेशन किसे कहते हैं? Miss, like for example, dividing certain tasks into two types, like they are certainly performing the same task, but like they are divided into sections for like advancing and like functioning, like in order to perform tasks more proficiently. Like they are divided into parts and they are going for a certain objective and working for that objective. All right.
every organization, every organization, even in home. Now, see, there were two people of your house who are leading the home, mother and father. They have different functions, yes or no? Yes. 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 So the different functions means they are different departments. Father is taking care of the outside external matters. So the whole day he is outside. He's not at home. He's working there in her office, wherever. Mother, she has some other functions. So she has to take care of the internal affairs of the house. So she needs to be at home. Even if she's a working woman, she will be spending a good number of time at home so that she can take care of the internal matters. Yes or no? Yes. Yes. So that's functional departmentation. Every organization has different functions. As you can see over here, one of the function is of sales and marketing, one of the function is of handling the finance, another function is to taking care of the personnel, which means your human resource, employees, staff, maintenance, security, and one of the function is of purchasing raw material, manufacturing is another function, and general administration. And there are many more functions. They have just given very basic five functions. There is research and development, there is your sales, there is your manufacturing department. So all the departments can be divided on the basis of their function. Okay, on the basis of what? Function, Function. their Function. tasks, their duties. Departmentation can also be done on the basis of Geographic. their geographical positioning, which means, can you give me example, Alishba? Let's say the example of any school or any office which have branches all over the city, Exactly. at Hyderabad, at Exactly. North Karachi, You have Gulshan, everywhere. you have So these country-wise branches are branches. also, You have country-wise branches. Okay, you have yes, regional branches. Very good. Next. Another way to departmentation is product or brand. And what is this, Alishba? product or brand means if a business is making more than a product or more than two or three products they are, so they will be departing using their product. जैसे उनका अगर इफ दे आर यूजिंग सोप प्रोडक्ट्स तो उनकी सोप की अलग होगी. अगर वो लोग अपना एडिबल चीजें बना रहे होंगे जस्ट लाइक मसाले और इस तरह की, तो वो चीजें अलग, उनका डिपार्टमेंट होगा उसका. Exactly, exactly. The number of products they are manufacturing, the number of products or brands they are dealing it, उन सब का अलग अलग फिर समझो हेड ऑफिस बन जाएगा या अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना सिर्फ एडिबल चीजों का हो रहा है. Like let's take an example now of a supermarket. Have you ever been to a supermarket? यस. How many products you see there? मैनी प्रोडक्ट्स. Many products. There are some dairy products, yes or no? There are यस. general house products like jhadu, dustbin, tray, glass, cups. There are some other stuff like edibles. There are some other stuffs like surf, vagera, shampoos, beauty products. There are some medicinal products as well, right? There are some यस. meat and vegetable products. So all of यस. these are kept on the same shelf, नो. or they दे have आर डिपार्टमेंट्स. sections, दे हैव separations. separations, different sections in the supermarket. So they can be called departments. Don't you think so? If a person is standing over here and taking care of the dairy products that are on the shelf, do you think he is interfering with the medicinal products which are on the medicine shelf? यस. Is he? Is he interfering with the medical section? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. No, I'm saying आप सुपरमार्केट गए हो, इधर करीब में एक हैदरी सुपरमार्ट है, वहां कभी विजिट किए? यस. Yes. तो सुपरमार्ट में जब आप जाते हैं, there are so many sections, right? There is a dairy section, there is cheese, जहाँ पे चीज, दूध, दही, वो डेयरी सेक्शन है. फिर एक सेक्शन छोटा सा उन्होंने अलग सा बनाया हुआ है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हम्म. हैं, ठीक है, बैंडेजेस मिलते हैं. फिर एक छोटा सा सेक्शन अलग बनाया हुआ है जहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेकअप स्टफ, डियोज एंड नेल पॉलिशेस, वो सब मिलता है.
देन देयर इज अनदर सेक्शन के जहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, अनदर सेक्शन के जहाँ पे बिस्किट्स मिल रहे हैं, अनदर सेक्शन जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, अनदर सेक्शन जहाँ पे ग्रोसरी आइटम है जैसे कि दाल चावल आटा चीनी, right? So I'm Yes, saying that every section is separate, which means can we call it a department? yes, we can. Okay, so if a person, any person, because there are many salesmen standing over there, they are taking care of each of their sections, Yes, yes or no, in the supermarket. yes. So if this person is taking care of the dairy section, will he interfere with the medicine section? No, No. he will not. No. क्योंकि That उसे सिर्फ डेयरी ही अलॉट किया गया होगा. इसका मतलब है डिपार्टमेंटेशन कि मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं अलग डिपार्टमेंट से हूँ, आप अलग डिपार्टमेंट से हो। मैं अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में उंगली नहीं डालूंगी, अनलेस मुझसे कोई पूछे, अनलेस मुझसे कोई इंफॉर्मेशन आस्क करे, या अनलेस कोई प्रॉब्लम आए जिसके लिए मुझे कोई अप्रोच करे कि आप प्लीज सॉल्व करो। मैं तब तक खुद से जाके अपनी नाक नहीं घुसाऊंगी उस काम में। इसीलिए ये डिपार्टमेंटेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ताकि हर डिपार्टमेंट अपना काम स्मूथली करे, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करे, एंड येट वी बिलोंग टू द सेम हाउस, वे येट वी बिलोंग टू द सेम इदारा, येट वी आर द सेम सुपरमार्केट अंडर द सेम रूफ। यस, गेटिंग द पॉइंट Yes, मुतशम? Yes. Yes, miss. ऑल राइट, मूविंग अहेड। नाउ प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन के बाद आती है बात सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यस अलिशबा, ओवर टू यू। all right. Centralization and decentralization. Centralization simply means कि अगर किसी ऑफिस, लेट से कोई ऑफिस है जिसका हर टास्क, उसका हर फैसला, हर चीज उसके हेड ऑफिस में हो रही है, तो वो ऑफिस सेंट्रलाइज कहलाएगा. उसके हेड ऑफिस से उसके आगे ऑर्डर्स जाते हैं, हर ब्रांच में डिफरेंट डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस से जाते हैं, तो ऐसा जो भी ऑफिस होगा उसे हम सेंट्रलाइज कहेंगे. लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरा एक ऑफिस लें जिसके हेड ऑफिस में नहीं बल्कि हर ऑफिस में अपना स्पेसिफिक टास्क लिए, अपना ऑर्डर अपने लिए जा रहे हैं डिसीजंस, तो उस ऑफिस को हम डिसेंट्रलाइज कहेंगे. ओके मोहतशम, बात क्या समझ आई है? मिस लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक ऑफिस है, तो वहाँ पर जो है उसकी डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वहाँ की मेन, तो वो वहाँ के अंडर जो हो रही है, मतलब वो वहाँ से लेकर मतलब आगे तक मतलब सारा वो गाइड कर रहा है सारी ब्रांचेस को। तो ये मतलब तो ये सेंट्रलाइजेशन हुई। और डिसेंट्रलाइजेशन वो जो कि मतलब लाइक लोकल लोकल ब्रांच जो मतलब अपने अंडर ही मतलब सब कर रही है। Right. We can use the example over here of ACCA. ACCA is a centralized organization. The head office of ACCA is in London. लंदन. लंदन। लंदन। अब लंदन से क्या हो रहा है? लंदन से पॉलिसीज बन रही है, लंदन हेड ऑफिस में पॉलिसीज बन रही है, लंदन हेड ऑफिस में एग्जामिनेशन पेपर्स बन रहे हैं, लंदन हेड ऑफिस में एग्जामिनेशन के आंसर स्क्रिप्ट्स चेक हो रहे हैं, लंदन हेड ऑफिस से फीस रिसीव हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है। लंदन हेड ऑफिस से सारे तमाम फैसले आ रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमें कहाँ कहाँ कितनी ब्रांचेस एसीसीए की खोलनी है। लंदन के हेड ऑफिस से ये फैसला हो रहा है कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर अप्रूव होगा फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सारे फैसले, ये सारे मामला कहाँ हो रहे हैं? एसीसीए के हेड ऑफिस। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाएगा, दैट ऑल द पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस मेजर मेजर डिसीशंस are taking place in the London head office. Therefore, ACCA is a centralized organization. And ACCA is having its offices all over the world in more than 144 countries. मोर देन 144 कंट्रीज में एसीसीए के ऑफिसेज हैं, मगर जो मेन हेड ऑफिस है वो लंदन में है। मेन फैसले सारे यहीं से होंगे।
बाकी सब जगह है, पाकिस्तान का ऑफिस अलग है, इंडिया का ऑफिस अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, श्रीलंका का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, चाइना का अलग है, हर एक का एसीसी का ऑफिस अलग है। बट वो ऑफिसेस क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे काम। बड़ा काम कौन कर रहा है? लंदन हेड ऑफिस। हेड मेजर ऑफिस। काम कौन कर रहे हैं? लंदन हेड ऑफिस। एग्जामिनेशन पेपर्स कहाँ से कंडक्ट हो रहे हैं? वहां से। ठीक है, बात समझ आ रही है? दिस इज सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं? डिसेंट्रलाइज इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। डिसेंट्रलाइज कहता है कि ठीक है, पिज्जा हट एक नाम है। पिज्जा हट जब स्टार्ट हुआ था तो इटली में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पिज्जा हट ने फिर क्या किया? अपने फ्रेंचाइजेस बेचने शुरू कर दिए। और अब जहां जहां पिज्जा हट है उनके पास फ्रेंचाइज है, उनके पास लीगल इजाजत है टू यूज द नेम, टू यूज द मेन्यू, टू यूज द रेसिपी। मगर वो अपने फैसले खुद लेते हैं। वो अपने मेजर डिसीजंस खुद लेते हैं। कहाँ ब्रांच खोलनी है, कितनी बड़ी खोलनी है, छोटी खोलनी है कि बड़ी खोलनी है, इकोनॉमिक हालात के हिसाब से या यहाँ के कल्चर के हिसाब से, कब डिस्काउंट देना है कब नहीं देना है, कोई नया मेन्यू ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स ऑल देयर डिसीजन। नाम सिर्फ किसका यूज हो रहा है? पिज्जा हट का। कोई एक आधा मेजर दो चार रेसिपीज उनकी यूज हो रही हैं और बाकी उसमें इनोवेशन की जा सकती है। राइट? मगर एसीसीए के एग्जामिनेशन पेपर में कोई इनोवेशन नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान में अलग पेपर आएगा और इंडिया में अलग पेपर जाएगा। नो, पूरी दुनिया में वही एग्जामिनेशन पेपर जाएगा MA1 का, जो पाकिस्तान में गया वही इंडिया में, वही अमेरिका में, वही कहीं किसी और कंट्री में। ठीक है? तो वहां इनोवेशन की गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें कुछ हैंकी पैंकी करो, इनोवेशन कर लो। नो, जो पॉलिसीज दी गई हैं, जो रास्ता दिखाया गया है उसी पे चलना है। दैट इज सेंट्रलाइजेशन। ऑल राइट। ओके, इज इट क्लियर मोहतशम? Yes. So there are some advantages of centralized system and decentralized system. Yeah, advantages, I would like you guys to go through it yourself. We have roughly discussed it. Okay. Next. If we have a question, Motasham, I would like you to do it. Alishba has already done it. So can you quickly just answer this question? Yes, Natasha. Which of the following is not a function of the purchasing department? Purchasing department का इनमें से कौन सा function नहीं होता? Let me see. Yes, quickly. It's not that difficult. Ensuring that only required goods are purchased. Ensuring that suppliers used give the best price. Paying suppliers invoices. Negotiating discounts with suppliers. What is the Hmm. question asking, Motasham? Like what? Which one of the following is not a function of the purchasing department? All right. So we know that we are talking about purchasing department. Now, what will the purchasing department be doing? What are the responsibilities of purchasing department? Can you tell me? I think the answer would be B, ensuring that B. suppliers used give the best price. Okay, so this is the function which the purchasing department would not be doing. Are you Ensuring sure? the supplies used is the best price. Okay, so have you locked your answer B? Shall we see what's the answer? Miss, I'm a bit confused. Yes, miss. Between which options are you getting confused? Miss, just log the answer B. I think Okay, it's the correct. the answer is C. Okay,
ensuring that only required goods are purchased, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है। यस और नो, फंक्शन है उसका कि भाई परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट ही इसीलिए किया गया है टू एंश्योर दैट रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग परचेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। रेलिवेंट प्रोडक्ट्स। अब कोई भी ओके। सवाल आए ना मोहतशम, कोई भी सवाल है, देखो आप बोलोगे ओ माय गॉड ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कहीं ऊपर, ये क्यों सवाल आ गया। नो, when we talk about ACCA, when we talk about the chapters, the questions, you have to keep your mind open। आप अपनी रियल लाइफ में कितने बिजनेसेस देख चुके हो? बहुत सारे, अपने आसपास आके खोलो। You have been to यस। supermarket, you have been to hospitals, you have been to restaurants, you have been to big malls. Open your eyes and see it from a business point of view. Okay, so when you visit ओके। the supermarket, what would be the purchasing department of a healthy supermarket be doing? Purchasing the right kinds of inventory. Yes or no? यस। Then what else would it be doing? It would be looking or ensuring that suppliers used give the best price. The suppliers from where they are purchasing the products for their supermarket, those suppliers are giving them at good price. Good price means bulk discounts, quality goods, and the right price. They have to ensure that they are not choosing a very expensive supplier. Like always related with a very यस। होमली एग्जाम्पल। अब आप घर में भी अगर आपके पास 10,000 आ जाते हैं और आपको ईद के कपड़े खरीदने हैं, तो आप यही देखोगे ना कि मैं ईद के कपड़े सबसे कम प्राइस में कहाँ से खरीद सकता हूँ जो मेरी पसंद के भी हो, अच्छे भी हो। ऐसा ही सोचोगे ना? कोई भी आम इंसान, यस। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा ऐसे ही सोचेगा कि ताकि 10,000 में से फर्ज करें मेरे 4,000 कपड़ों में लग गए, बाकी 6,000 का मैं कोई और चीज ले लूंगा, सारे मैं कपड़ों में क्यों उड़ाऊं? मुझे अगर अम्मी ने 10,000 का बजट दे ही दिया है तो मैं सारे ईद के कपड़े क्यों खरीदूं 10,000 में? मैं 3,000 के कपड़े पे खरीद लेता हूँ। कुर्ता पजामा ही तो पहनना होता है ईद पे, फिर तो सालों सालों अलमारी में ही लटका होता है। काम चलाने के लिए पहन लूंगा ईद की नमाज के लिए, फिर बाकी के पैसों का मैं कहीं हम बाहर चले जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, कोई छोटा सा ट्रिप कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। या मुझे लैपटॉप खरीदना है या मुझे मोबाइल खरीदना है, वो पैसे मैं वहां यूज कर लूंगा। सो यू वुड बी लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां आपको बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट मिले। जब भी बात परचेजिंग की आएगी, तो परचेजिंग चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या डिपार्टमेंट लेवल पे हो या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, इंसान का दिमाग यही सोचेगा कि मुझे वहां से खरीदना है जहां से मुझे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाए। यस और यस मिस। नाउ द थर्ड, पेइंग सप्लायर्स इनवॉइसेस। अब सप्लायर से माल तो खरीद लिया, मगर अब सप्लायर को पे बैक भी तो करना है ना, पेमेंट भी तो करनी है। तो अब आप सोचो कि क्या इदारे में परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो सप्लायर की इनवॉइसेस को भी पे करे? क्योंकि अमूमी तौर पे क्या होता है, व्हेन यू थिंक ऑफ एट एन इंडिविजुअल लेवल, आप गए दुकान पे, आपको कुर्ता पसंद आया, आपने खरीदा, आपने उसी वक्त पैसे दिया, आप वापस आ। मगर इदारे के लेवल पे ऐसा नहीं होता। अब आप सुपरमार्केट के लेवल पे आए, आपको लगता है कि सुपरमार्केट ने कहीं से 10 कार्टन तेल का खरीदा और फौरन पैसे दे दिए होंगे? नहीं। नहीं। चलो दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में सब्जी वाला आता है कहीं ठेला लेके? यस, आता है कभी मिस। कभी फल वाले से फल लिए? जी। कभी ऐसे ही गप लगाना उस फल वाले से या सब्जी वाले से और उससे पूछना कि तुम ये जितनी भी सब्जी लेकर आए हो तुमने इसके पैसे दे दिए? तो सुनना उसका जवाब क्या होगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, जब बेच लूंगा ना फिर जो पैसे आएंगे फिर पे करूंगा। तो क्या बात समझ आ रही? ओ। कि भाई क्रेडिट पे खरीद है, क्रेडिट पे खरीद है, उधार पे लिए कि जब बिक जाएगा माल तो जो पैसे आएंगे उसमें से आपको पे कर दूंगा। So that ओके। is ओके। paying suppliers invoices. So when you pay suppliers invoices, it is not always in every organization that purchasing department would be responsible for it. Purchasing department is only responsible for purchasing. For this particular thing, the finance department would be responsible. क्योंकि फाइनेंस यानी पैसा, हर डिपार्टमेंट, आप हैदरी सुपरमार्केट की एग्जांपल ले लो। आपको लगता है कि हर डिपार्टमेंट के पास पैसों की हैंडलिंग होगी या होनी चाहिए? हम्म, नहीं। नहीं।
क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले सुपरमार्ट की ही एग्जाम्पल ली और हमने देखा कि उसमें कितने सारे सेक्शंस बन रहे हैं। डेयरी का सेक्शन अलग, ग्रोसरी का अलग, मेडिसिन का अलग, कपड़ों का अलग। तो आपको लगता है कि हर इंडिविजुअल सेक्शन अपने अपने परचेजिंग और अपनी अपनी पैसे क्लियर करना खुद ही कर रहा होगा? यस 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 कर रहा होगा। नहीं ना। क्यों करेगा? जब पैसों की बात आएगी तो पैसों के मामले में हैदरी सुपरमार्केट इज द बिग बॉस। जब घर में भी, आपके घर में भी पैसों की बात आएगी, योर फादर इज द बिग बॉस। आपकी मदर कोई बड़ा खर्चा आपके फादर के मशवरे के बगैर नहीं करेंगी। बड़े खर्चे की बात कर रही हूँ। बड़ा खर्चा यानी फर्नीचर लेना है, बड़ा खर्चा यानी पूरे घर का पेंट होना है, बड़ा खर्चा यानी बड़ी सी टैंकी ऊपर पानी की लगाई हुई है, उसकी मरम्मत होनी है या वो चेंज होनी है। कोई भी बड़ा खर्चा आपकी मम्मा एडवाइस, मशवरा लिए बगैर, आपके फादर की इजाजत के बगैर नहीं करेंगी। घर के छोटे मोटे खर्चे तो वो खुद ही फैसले कर रही होंगी कि बिजली का बिल आ रहा है, या वो मासी को पैसे देने हैं, या मासी बीमार हो गई है उसको कुछ एडिशनल पैसों की जरूरत है, या ग्रोसरी है, या ये है। छोटे मोटे काम तो वो रोजमर्रा के खुद ही कर रही होंगी, बट द बिग डिसीशंस और द बिग finance related decisions, the departments will not be doing it all by themselves. There has to be the head office, the central point, and that central point is the finance department. कि वहां पे हर बात, सारे डिपार्टमेंट्स की हर बात, हर रिक्वायरमेंट, हर जरूरत कहाँ जा रही होगी? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है, क्या आप ये मंगवा दोगे, क्या आप ये कर दोगे, क्या हमारा इतना बजट है, नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि बजट है कि नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, या इस खर्चे को अगले महीने के लिए होल्ड कर लो। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। ओके। कोई तो ओनर होगा ना। हैदरी सुपर मार्केट ऐसे ही सब सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना चला रहे हैं अलग अलग, ऐसे तो नहीं ना। इंटरनल मैटर्स, यस, डिपार्टमेंटेशन मीन्स ओनली किस हद तक डिपार्टमेंटेशन है? फॉर हैंडलिंग इंटरनल मैटर्स। मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। अगर आप कोई और डिपार्टमेंट में है, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर ओन डिपार्टमेंट। हम लोग इंटरनल मैटर्स, इंटरनल अफेयर्स में एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। बट येस, द बिगर डिसीशंस वी नीड द परमिशन ऑफ द ओनर, ऑफ द अथॉरिटी, ऑफ द मेन डिपार्टमेंट। यू कैनॉट जस्ट डू इट एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। नहीं तो हर डिपार्टमेंट तो अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खुद बना लेना। फिर तो एक घर नहीं हुआ, फिर तो एक इदारा नहीं हुआ। फिर हर कोई अगर अपने सारे ही फैसले अलग अलग कर रहा होगा, फिर ये तो अलग अलग इदारे बन जाएंगे। क्या ख्याल है? यस मिस, एग्जैक्टली। अलिशबा, बात समझ आ रही है? यस मैम। Right. The fourth one, negotiating discounts with suppliers. Will the purchase department negotiate discounts? यस। यस मिस, यस। Yes, it can do, of course. Why not? It can negotiate to some amount, right? So the C is the answer for this. Now, Alishba, over to you. Policy manual. What's a policy manual? Read and explain. Policy manual is a handwritten or maybe printed book that ensure that that make all the policies for the workers, and everyone who belongs to that department will be following that. In short, a policy manual ensure that all personnel follow procedures and best practices. इसको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? रूल बुक Yes, कह rule सकते हैं। books. क्या बुक ऑफ लॉ है, इसको फॉलो करना है। इदारा ज्वाइन किया तो इदारे की पॉलिसी फॉलो करनी है। ठीक Yes. है जी, ओके। नेक्स्ट। Main types of transactions. Go ahead, Alishba. Let me see your skills. The main transactions any business is making are sales. मतलब जो भी चीज वो business बेच रहा है, either their assets or they are their products or services, जो भी चीज वो बेच रहे हैं वो उनकी सेल्स में आएगी। ये भी एक तरह की ट्रांजेक्शन है। परचेजेस, जो भी चीज वो अपने बिजनेस के लिए बाय कर रहे हैं, करंट नॉन करंट एनीथिंग, वो सब परचेज में आ जाएगा। बल्कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नॉन करंट आएगा, करंट आएगा, सॉरी, करंट एसेट्स जो हैं वो परचेजेस में आएंगे एंड नॉन करंट। All right, all right. Hold on, hold on.
Right now, what are we studying? Main types of transactions. What is a transaction? Motasham, what's a transaction? Miss, लेन देन. लेन देन, सिंपल अल्फाजों में लेन देन, buy and sell, that's it. That's a Yes. transaction. And what are the main types of transactions in any business or on an individual level or in an organizational level? So there are sales, purchases, paying expenses, paying employees, and purchasing non-current assets. That's it. Okay. सीधी सी बात है, लेन देन में क्या हो रहा है? या तो आप खरीद रहे हो, या आप बेच रहे हो, या आप अपना कोई खर्चा पे ऑफ कर रहे हो, बिजली का बिल या रेंट या टेलीफोन का बिल, या आप अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे रहे हो, या फिर आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, कोई एसी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, कोई नॉन करंट एसेट खरीद रहे हो। यस और नो? यस। Yes. यही पांच चीजें, मेन पांच चीजें हैं जो घुमा फिरा के आप इसको ट्रांजैक्शन कहते हो। ठीक है, next, now the details of all of these, I am expecting you guys know this, you can just go through it. Okay, now the second question, please read. Motasham. Which one of the following personnel is an organization would not be involved in the purchase of materials? Credit controller, stores manager, accounts clerk, purchasing manager. Waiting for the answer. Would not, yes. एक minute. Purchase of material, I think A, credit controller. Who is a credit controller? Let's just define one by one. Who are these people? Who is a credit controller? Miss, someone like, for example, who would give something on loan, like, for example. Okay. Alishba, who is a credit controller? क्रेडिट कंट्रोलर वो होगा जो आपको जितने भी रिसीव करने हैं पैसे, लाइक जितना भी आपने क्रेडिट पे सेल्स की है उसकी जो अमाउंट रिसीव करनी है वो चीजें देख रहा होगा क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोलर। Okay. Stores manager कौन है Alishba? क्या? Stores manager. Who is a stores manager? who will be looking after the store, What's a like store? स्टोर जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही होंगी, जहाँ पे आपके गुड्स स्टोर हुए हुए होंगे। Right. Who is an accounts clerk? The clerk will be making inventory, Clerk will be making inventory, recording inventory or making inventory. recording. Who is a purchasing manager? Yes. Who is a purchasing manager? Purchasing manager is the one who will make purchase requisition. All right. Motasham, what do you think is the answer? Give a guess. Miss, I think A would be the answer. A. Right. Correct. Okay. So I hope this question is clear and you're getting hold of how question needs to be answered. Now, next, control over transactions. Alishba. Control over transaction is simply means looking after all the transactions, noting, recording every transaction, just to avoid, just to minimize the chance of loss, fraud. In order to, in order for management to control the transaction of business, there must be a system of authorization of transaction in place. Why? See, we have done the transaction. We know कोई भी लेन देन को transaction कहते हैं. ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की आखिर जरूरत क्यों?
ताकि जितने भी फ्रॉड के और एरर्स के चांसेस हैं वो हमारे मिनिमाइज हो जाएं और बिजनेस को एज सच कोई बड़ा लॉस ना हो। एग्जैक्टली ताकि एरर्स, फ्रॉड, करप्टेड एक्टिविटीज, थेफ्ट, इन सब चीजों पे काबू पाया जा सके। ओके, क्या हम इसको यस। कंप्लीटली हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? तो बट चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम कंट्रोल सही से करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिटन एंड एग्जैक्टली, मोहतशम बात क्लियर है? Yes, miss. Okay, moving ahead. Double entry bookkeeping, the basic principles. Now, I would like Mohtasham to explain this to me since you have a basic knowledge about it. I would like to know how much you know about this. Miss, basically, if we talk about the double entry, it is the system basically in which the transactions are recorded twice, one on the debit side and another on the credit side. Okay. So, like for example, there has been explained that debit entries in ledger accounts, uh, are increases in assets and expenses and decreases in liabilities and income. Today, that has been explained that in debit entries, the ledger accounts would be in like assets or expenses and decreases in liabilities and income. Like for example, it's like discussing the nature of accounts basically. If the debit side for assets, if debit side increases, then credit side would decrease. And like for example, if we talk about the expenses, if debit side increases, then credit side would decrease. Okay. What you do, I'm giving you just a little bit of अकाउंटिंग का चश्मा. व्हाट इज इट कॉल्ड? अकाउंटिंग का चश्मा. जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं हम अपने बच्चों को क्या पहना देते हैं? अकाउंटिंग का चश्मा. सो नाउ हियर इट बिकम्स easier for you to remember and not to get confused ever in your life about the double entry golden rules. So the first is debit. This side is the debit side and this side is the credit side. Alishba, I would like you to tell me what are the basic ingredients or elements in a business. वेदर हम एक छोटे ठेले वाले को एसेट्स। देखें या हम बड़े से बड़े बिजनेस को देखें, कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा एक फल वाला चला रहा हो, चाय वाला हो, या फिर फ्राइज बनाने वाला, या फिर कोई बहुत मल्टी नेशनल कंपनी चला रहा हो, ये 5 इंग्रेडिएंट्स उस बिजनेस में मौजूद होंगे. यस। वो कौन से? एसेट्स, ओके. कैपिटल, ओके. लायबिलिटी, यस. एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है. इनकम। एंड इनकम. सो दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी बिजनेस. इसको हम कहते हैं AELIC. क्या कहते हैं? AELIC. एल। LIC. A फॉर एसेट्स, E फॉर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस का भी उनसर शामिल है. LIC, लाइबिलिटी, इनकम, इनकम के साथ छोटा सा गेन का भी पोर्शन शामिल है, एंड देन कैपिटल. That's it. I'm assuming that Motasham, you are well aware of all these 5 ingredients. Okay. What are they? What is an asset? How many types of assets? What are liabilities? How many types of liabilities? What is an income? What is an expense? What is a capital? Are you aware of all these 5 ingredients? Yes. Right. So now coming to the accounting का चश्मा. अब अकाउंटिंग का चश्मा कहता ये है कि भैया, जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा और जब भी LIC इंक्रीज होगा, ये दोनों इस ऐसे ही अपने चश्मों में आएंगे. एसेट एक्सपेंस इंक्रीजेस गोज टू द डेबिट, LIC इंक्रीजेस गोज टू द क्रेडिट. सीधी सी बात है. बस इसको एज इट इज याद कर लो. नाउ if the opposite happens, if the opposite happens, that means if the asset and expenses decrease, then they will be recorded on the credit side. If LIC decreases, then they will be recorded on the debit side. So just opposite will happen. तो बेसिक क्या है? आपने सिर्फ बेसिक क्या याद रखना है? ये जहां इसका ऑपोजिट हुआ, स्विच कर दो. यस। स्विच कर दो. Okay. ये वाला ग्लास जो है LIC का इधर आ जाएगा, AE का ग्लास इधर आ जाएगा. दैट्स इट. Okay. ओके. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े.
So these Yes. are the basic golden rules for a double entry bookkeeping. And this is one of the formulas which you need to remember. Asset minus liability is equals to capital plus profit minus drawings. What are drawings, Alishba? अब ड्राइंग वो अमाउंट होगी जो बिजनेस ओनर बिजनेस में से निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए ले ले, या वो जिम में जाते। Do you agree, Motasham? Is Alishba right? Yes, miss. Yes, Yes. exactly. Okay. Now, coming to the question number next. Which of the following is the correct double entry for sale on credit? Motasham, quickly. Miss B. B. Oops, it's C. Why did you say B? Oh, sales. Sales on credit. What do you understand by sales on credit? Oh, sorry. Like we sell something, but the We amount is sell coming to us, something then and we are selling it on credit. जिसका क्या मतलब हुआ? हम yes. उधार पे बेच रहे हैं. उधार पे, yes, yes. हमें अभी पैसे रिसीव नहीं हुए. तो जब पैसे रिसीव नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स के नाम का टीका लगाएंगे. ठीक है. और सेल्स, Okay. क्योंकि हमने सामान तो दे दिया, सामान तो चला गया हमारे पास से. So we have already given away something which therefore has been recorded on the sales side, credit side. Okay. Clear? Yes. Okay. Now what is a cost ledger accounting? उससे पहले what are the books of prime entry? Alishba. वो बुक्स जहाँ पे सबसे पहली बार एंट्री हो किसी भी सेल की या किसी भी परचेज की, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती हैं। यस, यानी कि अगर आप एक दुकानदार हो और आप दुकान पे खड़े हो, अब आप वहां पे ये डबल एंट्री बुककीपिंग तो बनाने नहीं बैठ जाओगे ना. ये सारा ऐसा डेबिट क्रेडिट कहाँ डाले जर्नल बनाने ये बैठ जाओगे मोहतशम? No, miss. आप फटाफट क्या करोगे? कस्टमर को फारिग करोगे. अपने पास एक लाइन में एक रसीद बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, उसको दोगे, पैसे दोगे. पैसे जो चेंज चाहिए उसको चेंज दोगे, माल दोगे, शॉपर में डालोगे, फटाफट उसे फारिग करोगे. फिर दूसरा कस्टमर आ जाएगा. वहां बैठ के Yes. आपको जर्नल बनाने का टाइम नहीं है. So Yes. therefore, these books of prime entry come into use. They say use the books of prime entry. पहली दफा एक किसी भी कॉपी बना लो, उसमें फटाफट रिकॉर्डिंग करो, कस्टमर को फारिग करो, रश ना लगाओ दुकान पे. फिर सुकून से उसको जर्नल लेजर सब जगह डालते रहे. Now we are talking Yes. about this because we know that जब अकाउंट्स इजाद हुई उस वक्त कंप्यूटर सिस्टम नहीं एग्जिस्टेंस में आए थे. उस वक्त मैनुअली हर चीज होती थी. बड़े बड़े खाते, रजिस्टर्स, क्लार्क्स, मुंशी, पता नहीं कौन कौन बैठता था जर्नल लेजर बनाने के लिए. पता नहीं कितनी कितनी बार चेकिंग होती थी मैनुअली. सो ये उस जमाने की बात है कि प्राइमरी डे बुक्स पहले होती थी जिसमें एक दफा आपने फटाफट लिख लिया, बाद में आपने अकाउंटेंट अपने क्लार्क को, मुंशी को पकड़ा दिया सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट, और उसने प्रॉपर उसकी जर्नल एंट्री की, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस में डाला, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए. सो व्हाट आर योर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री? क्या क्या नाम है इनके? अलिशबा प्लीज रीड. अच्छा, ये सेल्स डे बुक, लाइक जिस जिस सेल होंगी वो इस बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। सेल्स रिटर्न डे बुक, जो जो सेल्स रिटर्न हुई हुई होंगी या जिसमें डिफॉल्ट होगा, जो इनके पास रिटर्न होने आई होंगी, वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस डे बुक, जो जो परचेजेस होंगी उनकी, लाइक चौकीदार का खाना और चाय, एनीथिंग, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेजेस रिटर्न बुक, जो जो परचेजेस उन्होंने रिटर्न की होंगी वो इसमें नोट होंगे। कैश रिसीव बुक, जो कैश रिसीव हो रहा होगा वो इसमें लिखा जाएगा। और कैश पेमेंट बुक, जितना भी कैश वो पे करेंगे वो इस बुक में लिखेंगे। एंड पेटी कैश, जो बुक होती है नॉर्मल जिसमें पैसे लिखते हैं। पेटी कैश यानी कि रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे. पप्पू चाय तो ले आ, पप्पू ग्लू स्टिक ले आ, ठीक है ना. पप्पू के हाथ में चोट लग गई, बैंडेज मंगा दे. अरे अरे टीचर को बुखार आ गया, पैराडॉल मंगा दे. ठीक है, पेटी कैश छोटे मोटे कैश के खर्चे.
All right, and then finally all these will be taken to the journal. जर्नल। मगर मुझे एक बात बताओ, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में इस पूरी लिस्ट में जर्नल का नाम भी है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि मैम आपने तो कहा था कि जर्नल हम आराम से भरेंगे, तो आप ये मतलब यहाँ प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री में इसका नाम क्यों है? मोहतशम, व्हाट डू यू थिंक? मिस क्योंकि इसको मतलब समझ लें, इसका इंटायर जो पूरा सिनेरियो है वो सारा इसके अंदर राइट डाउन होगा एंड में, तो आई थिंक इसलिए राइट। एंड कोड ऑफ पार्ट बाज़ात ऑफ। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है चीज, उनको उतनी कैश बुक्स और ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग मैनुअली भी इसको स्पेशलाइज जर्नल खाता बनवा लेते हैं, जो स्पेशलाइज बना ही जर्नल के पैटर्न पे होते हैं, उन्होंने सिर्फ लिखना है। और कुछ लोग इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ लोग अकाउंटेंट ही या बंदा ही इस तरह का बिठाते हैं जिसको नॉलेज हो, जो डायरेक्टली जर्नल में एंट्री ठकाठक ठकाठक लगा ले। तो ऐसे भी इदारे मौजूद हैं, so they can even do that, but usually it's not practiced that way। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। now this is your question, go ahead, quickly give me the answer। मिस सी। see, all right, you are right। okay जी, Alishba, what is an integrated system and an interlocking system? इंटीग्रेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन एक साथ होता है। लाइक दे वो लोग बिल्कुल क्या कहेंगे, साथ साथ होता है उनका। लेकिन combined। इंटरलॉकिंग में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इंटरलॉकिंग में अलग अलग मेंटेन किया जाता है, कॉस्ट को भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक का है, भी। ओके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Okay, here is a question again, Mohtasham। The following statement is correct. Interlocking system is a single system for cost and financial accounting. Um, मिस क्योंकि इंटरलॉकिंग मिस वो है ना जहाँ पे अलग अलग बनते हैं। इंटरलॉकिंग अलग होता है, इंटीग्रेटेड यस। साथ होता है, कंबाइंड। आई गेस सी इज द करेक्ट आंसर। सी, यस। yes, okay, so I hope now ओके। you're getting an idea about how questions are asked। Computerized accounting systems, we know everything has become computerized now. You visit the supermarket, everything is so easy. You just go to the counter, give your products which you want to purchase. They have a scanner, they scan your product, the bill is made in the computer, it's recorded. Automatically, the inventory warehouse is updated and the finance also is updated and the price is also stated and the bill is also printed। तो एक साथ ही सारे काम हो जाते हैं कंप्यूटर में, जब से कंप्यूटर्स आए हैं। और कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स आज तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा ओके। टेंशन नहीं है, अब आपको सॉफ्टवेयर सीखना है एंड योर गुड टू गो। योर क्वेश्चन कुड बी ओवर हियर मैम, आप कह रही हैं कि भाई सब कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और यू नो एवरीथिंग इज सो एडवांस नाउ, तो हम अकाउंटेंट्स की क्या जरूरत है फिर? हमें क्या जरूरत है कि हम ये पूरा पढ़े कि जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। The computer knows it. Just give a command. Just know how to run the software. ये क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में? यस मिस। यस। तो इसका आंसर ये है बेटा कि जितनी चीजें एडवांस्ड होती जाएंगी ना, उतना आपके लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि वो काम जो एक कंप्यूटर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी कर सकता है, उसकी जद्दोजहद और मेहनत क्यों करें हम इंसान? हमारे पास तो रियल इंटेलिजेंस है, और उस रियल इंटेलिजेंस से हमें रियल काम करने हैं। वी नीड टू थिंक अहेड।
We need to be smart. We need to learn problem solving skills. Artificial intelligence cannot solve a new problem. COVID आ गया. COVID was a new kind of a new kind of a germ, new kind of a virus, right? Yes. Yes. उसको अगर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम डिपेंडेंट होते और हमने जैसे बिल्कुल ही हमने सोचना बंद कर दिया होता, क्या हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते थे? No. No. But because our scientists, our researchers, our doctors knew the basics of biology, knew the basics कि क्या होता है, कैसे होता है, they were able to manufacture, develop a new vaccine to kill this particular or to control this particular virus. एआई को तो उसका कुछ पता ही नहीं है. एआई कैसे करेगा? वो तो जो हम इंसान एआई को सिखाएंगे वो वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. गेटिंग Yes. माय पॉइंट? सो द सेम वे नाउ व्हाट एसीसी इज लुकिंग फॉर, और व्हाट ये तो हम जो एक पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे अकाउंटेंसी की बेस बने, हमें पता हो कि क्या थी, क्या हालात थे, किस क्यों अकाउंटेंसी इजाद हुई, उसका फंक्शन क्या है, वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, उतना आपकी बेस, उतनी आपकी फाउंडेशन, बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या होगी? मजबूत. और जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी उस पे उतनी ही आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो सकती, जैसी चाहे बनाओ. And Yes. what ACC is looking forward is to develop analytical skills in you guys, in the accountants. कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स आए, आपके अंदर टर्मिनोलॉजीज आपको पता हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर आए. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही है, देखो आएंगे चैलेंजेस तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और बिना बताए आएंगे, और बहुत मुश्किल आएंगे कि आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है. क्योंकि आप गूगल नहीं हो, आप गूगल बनाने वाले हो. ये याद रखो, आप गूगल नहीं हो. आपने, इंसान ने गूगल को बनाया है, गूगल ने इंसान को नहीं बनाया है. तो Yes. जिस Yes. इंसान ने गूगल को बनाया है वो इंसान का दिमाग सोचो, वो किसने बनाया है? वो अल्लाह ताला ने बनाया है, तुम्हारे खालिक ने बनाया है. और उसने ये कह दिया है कि अल्लमा आदमा अस्मा अकुल्लहा, कि मैंने आदम को कुल का कुल इल्म देकर भेजा है. और आदम से मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम नहीं, आदम से मुराद ह्यूमैनिटी का एक यूनिट, ह्यूमन, एक human. And that human, you are a human, I am a human, anybody you meet is a human. तो फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है? आप में और मुझ में फर्क ये है कि आप शागिर्द हो और मैं उस्ताद हूँ, और मैं सिखाऊंगी आपको हाउ टू डिग आउट दैट नॉलेज फ्रॉम योर डेटाबेस. यू हैव इट ऑल इन यू. You have it all in you. You just need to learn how to dig out that information from your database. यही चीज एसीसीए भी चाह रहा है कि आपको रट्टाफिकेशन करके सिर्फ पास होके नंबर्स नहीं चाहिए उसको. ठीक है, पास होना एक क्राइटेरिया है, 50% चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, उसके बगैर गुजारा नहीं. बट वो आपको सिर्फ रोड लर्निंग क्वेश्चंस नहीं देगा, वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देगा, वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस देगा. अभी जितने भी क्वेश्चंस आए, अभी तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं, हमने ऐसे ही ऊपर से जो मैंने आपको नॉलेज शेयर की, क्वेश्चन बिल्कुल अलग था. मगर क्वेश्चन क्या था? आपकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे था, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे था. नहीं जाते आप आसपास, आप सुपरमार्ट्स नहीं जाते, आपने फल नहीं खरीदे, आपने सब्जी नहीं खरीदी, आप स्कूल्स विजिट नहीं किए. स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, एक इदारा, एक हॉस्पिटल, ये सब क्या है? बिजनेस मॉडल ही तो है. लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, डोंट लुक एट इट विद अ कस्टमर पर्सपेक्टिव. Look at it from a business point of view perspective, from an accounting perspective. Keep your eyes, ears, and your brains open when you go out. Ask the questions. Be inquisitive. Be curious how the departments are run.
How are they managing such a big team of the employees, right? Yes. तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, टू रीड द चैप्टर, गो थ्रू इट, हाईलाइट द डेफिनेशंस, मेक योर नोट्स, पुट इन द एफर्ट्स। एफर्ट्स जो फाउंडेशन बनाने में डालोगे वो तुम्हारे आगे स्किल्स और प्रोफेशनल में बहुत काम आएंगे। जो आज तुम मेहनत कर लोगे वो तुम्हारी जिंदगी आगे आसान और संवर जाएगी। ठीक है जी, ये चैप्टर कंप्लीट है। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू, आई हैव टोल्ड यू। ये पीछे के बैक साइड क्वेश्चंस हैं, विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स यू नीड टू सॉल्व देम। कोई नहीं समझ आए तो अगली क्लास में आपने पूछ लेना है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक बैक साइड चैप्टर के हैं, ये सॉल्व करने। एंड देन व्हेन यू परचेज द रिविजन किट you need to solve the revision kit as well. Please note, do not mark your answers with a pen. Do not mark your answers with a pen. Use a pencil. If you don't have a pencil, take another piece of paper. उसमें आंसर्स लिखते जाओ। जैसे कि ये तुम्हारे पास रिवीजन किट खुली है, ये तुमने अपनी नोटबुक रख ली है। रिवीजन किट का क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें लग रहा है आंसर ए है, तो तुम आंसर यहाँ छोटा सा लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 ए। फिर यहाँ नंबर 2 का आंसर तुम्हें लग रहा है बी है, तो यहाँ तुम लिखो बी। इससे क्या होगा, आप अपनी रिवीजन किट को पाक साफ रखोगे और आप अपनी रिवीजन किट को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई रेकमेंड माई स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस योर रिवीजन किट एटलीस्ट 3 टाइम्स। सेम रिवीजन किट जो बीपीपी की आप खरीदोगे उसको कम से कम 3 दफा पूरा मुकम्मल करना है। बात समझ आ रही है? यस। मिस वो तभी हो कहाँ से सक लेनी है परचेज? जी। तो मैं कहाँ से परचेज कर सकता हूँ बीपीबी की रिवीजन किट? ऑल राइट, हम लोग यहाँ पे मंगवा भी सकते हैं आपके लिए। इफ यू प्लेस एन ऑर्डर विद अस वी कैन परचेज इट फॉर यू। नहीं तो और बहुत सारे स्टोर्स हैं, अलजामिया बुक स्टोर है, वहाँ से परचेज कर सकते हो आप। ठीक है। ओके। ऑल राइट, नाउ द थिंग इज, इससे क्या होगा, आपने पेंसिल से मार्क नहीं की, आपकी रिविजन किट साफ सुथरी, आपके जहन में आंसर्स नक्श नहीं होंगे। पेन से करोगे मार्क तो मसला, पेंसिल से करोगे तो मिटाने का लफड़ा। ठीक है, this is best to take a piece of paper and just write it down, check the answers. If you feel that your concept is getting clear by the answer, good to go. If not, mark it down, note it down to ask me in the next class that मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये क्यों, या ये इसका आंसर ये क्यों, या ये क्यों नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही ओके। है? एंड मोस्ट यस। इम्पोर्टेंटली रिमेंबर, आज 12 तारीख है। अगली 12 से पहले पहले मैंने कोर्स कंप्लीट कराने, आपने साथ साथ मेरे पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई खत्म करेंगे फौरन आपने अपनी टेस्ट्स के लिए हम बैठेंगे, मॉक्स के लिए बैठेंगे, और हम मॉक के और फिर हम अपना पहला एग्जाम MA1 का दे देंगे। अच्छा, जो हमारा फाउंडेशन पेपर्स हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि MA1 एंड FA1 ये दोनों साथ साथ क्लासेस इसकी होंगी। यानी मैंने अभी MA1 की क्लास आपकी ले ली, अब FA1 मिस बुशरा आपकी लेंगी। तो ये दोनों पेपर्स हमारे फर्स्ट 2 मंथ्स का फोकस होगा। ठीक है, कोई सवाल? ओके मिस, ये जो आपके पास पीडीएफ है ये आप PDF हमें तो सेंड। ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके ओके मिस। ओके जी, चलें। ओके ओके। अलिशा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपने ऑलराइट। टिकट खरीदी है अलिशा? जी मिस। खरीद ली, सॉल्व किया आपने? मैं लेके बैठूंगी अभी हाँ, आफ्टर द क्लास। पर बैठ जाना, डोंट डिले। ओके, चलो। ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज।